एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अपना ट्यूटर। हमने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन देखा प्रोबेबिलिटी का, उसमें सारे कॉन्सेप्ट सीखे, एक्सरसाइज 14.1 करा, एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक करा, राइट। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे एंड यू हैव thoroughly solved each and every questions by yourself, right? Now we'll start with question number 16. In this lecture we will complete our exercise 14.2 and hence we'll complete our chapter probability. This was a quite an interesting and easy chapter, easy to score chapter, right? Okay, so let's start our question number 16. Before starting, first always read the question, try it by yourself and then see the video lecture. By this way you will able to gain much knowledge of solving questions, right? Okay, so let's start our questions. Hopefully you have paused the video and solve it by yourself or try to solve it at least, right? Okay, events E and F are such that P probability of not E or not F is 0.25. Okay, firstly probability of not E or not F, ये हमने पिछले लेक्चर में इस टाइप का एक क्वेश्चन करा था, राइट? होपफुली आपने पिछला लेक्चर का वो क्वेश्चन अच्छे से करा होगा, सो यू विल नाउ इजीली ट्राई टू solve this question and it's very easy, right? And then what we are asked, state whether E and F are mutually exclusive. What were mutually exclusive? अब तक you should be get thorough with the concept of mutually exclusive. ऐसे सारे events जिसके दो इवेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उन दो इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. Probability of mutually exclusive events intersection is probability of A intersection B, where A and B are mutually exclusive is null set. Yes, okay. अब we are asked the question, हमें चेक करना है क्या probability of E intersection F वो null set है. If yes, then answer is true. If no, then answer is false. Okay. Information क्या दिया है अपने पास बस एक probability दी है, not E और not F. पहले तो what do we mean by or? और का क्या मतलब होता था? What was or? It was union. It was union, right? And what was end? It was intersection. Intersection, right? By this, by now आपको ये अच्छे से पता हो जाना चाहिए, right? Very basic. Okay. Not E means E complement, union F complement we are given as 0.25. Now from this we need to find E intersection F, क्योंकि at last हमें चेक क्या करना है कि probability of E intersection F 0 है या नहीं, right? So we need to find from this, we need to go there, right? From this we need to go there. Okay, previous lectures में हमने क्या सीखा था? E not E union not F is nothing but E intersection F का complement, right? इसका complement करोगे तो क्या आएगा? not E intersection का complement union, F का complement F complement, right? So we can write as probability of not E union not F is equals to probability of E intersection F's complement, which is equals to कोई भी event probability of not A क्या होता है? Yes, 1 minus probability of E. Okay, which is 1 minus probability of E intersection F. आप देख रहे हो हम कैसे इससे हमें जो desired चीज़ थी हमने वो ढूंढ ली. Okay, which is given as 0.25. Now easily you can find probability of E intersection F is nothing but 1 minus 0.25, which is not equals to 0. So therefore E and F are not mutually exclusive. Easy question, right? बस क्या चीज़ का knowledge चाहिए था अपने को? This relation. How do we go from here to here, right? This was very important. और ये सारा basic knowledge आपने set theory में अच्छे से करा होगा, right? Okay, so easy question. Let's move to the next question. Okay. Again, read it by yourself. Do it by yourself. Okay. A and B are even such that probability of A is this, probability of B कुछ दिया है, probability of A and B, and क्या होता था अपना intersection,
Now we need to find probability of A complement, probability of B complement and और का क्या मतलब था? यूनियन, probability of A union B. ओके, वेरी इजी राइट, वेरी इजी. हमें बस एक ही फॉर्मूला चाहिए, जो फॉर्मूला मैं बार बार बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट. फॉर द थर्ड क्वेश्चन यू कैन इजीली फाइंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, right? We are already given intersections probability, probability of B and probability of A. So it's very easy. Take it as homework. Similarly, for first, what is asked? Probability of not A, which is 1 minus probability of A, which is nothing but 1 minus 0.42. Similarly, for B, probability of B complement is 1 minus probability of B, which is 1 minus 0.48. Okay, this is very easy questions. I think you are very clear. This will be 0.58 and what will be the next? 0.52, right? Okay, so third one is a homework, do it by yourself. This question was again very easy. दो ही concept हम बार बार use कर रहे हैं कि probability of A complement is nothing but 1 minus probability of A, probability of A union B वाला formula हम बार बार use कर रहे हैं, right? So please do remember these two formulas. Your most questions are being solved by these formulas, right? Okay, next. In a class 11 of a school, 40% of students study mathematics and 30% of students study biology. 10% of class study both maths and biology. If a student is selected at the random from the class, find the probability of studying mathematics or biology. Okay. पहले तो जो भी अपने को डेटा दिया हुआ है उसको लिख लो, राइट? ओके. How many percentage of students study mathematics? Is 40%. How many students study biology? 30%. Study both maths and what was and? What was and? It was M union B is 10%. Now what we need to find? Probability of or M intersection B. We need to find probability of M intersection B. Firstly उसके लिए पहले अपने को probability of M चाहिए रहेगा, probability of B चाहिए रहेगा और probability of M union B चाहिए रहेगा. Am I right? Yes? Okay. Now probability of mathematics students is number of favorable upon number of total. कितना दिया है? 40%. और total कितना परसेंट सारे बच्चे होंगे? 100%. So what is the probability? 40 by 100, that is nothing but 2 by 5. Similarly, probability of students studying biology is 30 upon 100, that is 3 by 10. Now probability of M union B, sorry, M intersection B, right? We need to find the unions. Okay, and what was end? Intersection. And what was or? Union. Okay, so M intersection B is 10 upon 100, that is 1 by 10. Now again similarly we just need to use the formula of union, and we have already the probability of intersection, probability of M and B you can easily find by this formula. What was that formula? Probability of mathematics plus probability of biology minus probability of M intersection B, that is 2 by 5 plus 3 by 10 minus 1 by 10. What is it? 3 by 5. Okay. Simple LCM, you can do it by yourself. Very easy question. Okay. We'll move to the next question. In an entrance test that is graded on the basis of 2 examination, कोई एक entrance test है जिसके gradings 2 examination पे base कर रहे हैं, right? The probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8. The probability of passing the second exam is 0.7. The probability of passing at least one of them, या at least one of them मतलब या एक या तो दो होगा तो भी चलेगा, एक तो होना ही चाहिए, यूं, is nothing but 0.95. What we need to find? We need to find the probability of passing both. Okay. First, if I say I define A as passing of examination A,
student passing the examination, first examination, right? I'm defining it as A. Similarly, B, passing second examination. Okay. Now probability of, first find probability of A, find probability of B. We are given that total of A union B is 0.95. Right? We are given that probability of A union B is 0.95. Probability of A is 0.8. Probability of B we are given as 0.7. Why I am saying probability of A union B is 0.95? Because at least one, या तो at least one मतलब कोई भी एक एलिमेंट है वो एक में तो है ही, वो दो में भी हो सकता है, एक में भी है. मतलब हम कौन से सेट की बात कर रहे हैं? यूनियन की, राइट? अब व्हाट वी आर आस्क्ड इज पासिंग बोथ, मतलब ऐसे सारे एलिमेंट्स जो दोनों में होने चाहिए. मतलब वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. यस, ओके. सो वी नो द फॉर्मूला. Probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So 0.95 is equals to 0.8 plus 0.7, and we need to find probability of A intersection B. So probability of A intersection B is 0.8 plus 0.7 minus 0.95. What is it? What is 0.8 plus 0.7? 1.5 minus 0.95, which is equals to 0.55. Okay. So we found our answer. The probability of A intersection B is 0.95. Okay. आप इसमें सारे वर्डिंग्स बहुत अच्छी तरह के समझे कि बोथ जब हो रहा है तब क्या ढूंढना है. एटलीस्ट वन, दिस टाइप्स ऑफ वर्डिंग्स आर द कीवर्ड्स फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, फॉर्मूला ही लगाना और कुछ नहीं है इस हार्ड इस क्वेश्चन में, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजीज, राइट? What is the both meaning, what we need to find, right? Okay, otherwise these questions are very easy based on only one formula, you can clearly see, right? Okay, so moving to the next question. Read the next question. What is the question saying? The probability that the student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5. एक बच्चा इंग्लिश और हिंदी दोनों ही एग्जामिनेशन पास कर देगा, उस चीज़ का प्रोबेबिलिटी हमें दिया है, दैट इज़ 0.5. द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज़ 0.1. कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं करेगा, उस चीज़ का प्रोबेबिलिटी है 0.1. इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, सिर्फ इंग्लिश एग्जामिनेशन का प्रोबेबिलिटी पास होने का वो हमें दिया है 0.5. नाउ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन? अब सिर्फ हिंदी एग्जामिनेशन पास करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? Okay, first let me write the given information, right? Okay, what is probability of A? Probability A event क्या है? Probability of passing our English examination, right? I am taking it as A. So probability of A is 0.75. Similarly, we need to find probability of B. Okay, now और क्या information दिया है? The probability in both the exam, both English and, again and का मतलब क्या होता था? यूनियन या इंटरसेक्शन क्या होता था? इंटरसेक्शन, राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.5. एंड वॉज इंटरसेक्शन और वॉज यूनियन, अगेन रिमाइंडिंग यू. ओके, नेक्स्ट हमने क्या दिया है? द प्रोबेबिलिटी कि वो एक भी एग्ज़ाम पास ना करे, एक भी एग्ज़ाम पास ना करे, मतलब वो हिंदी भी पास नहीं करना चाहिए, साथ ही वो इंग्लिश भी पास नहीं करना चाहिए, राइट? इंग्लिश भी नहीं मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, हिंदी नहीं मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों ही नहीं, दोनों साथ में नहीं होने चाहिए. सो व्हाट इज़ दैट? इंटरसेक्शन. सो व्हाट वी आर गिवन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट. व्हाट इज़ दैट? हमें क्या चाहिए? हमारा नोन फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वाला, राइट? उसके लिए उससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इजीली ढूंढ सकते हैं.
नाउ इंटरसेक्शन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट दिया हुआ। इसको और क्या लिख सकते हैं, हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में करा, यस, A union B का whole complement, which is nothing but 1 minus probability of A union B. Okay, so it is given as 0.1 is equals to 1 minus probability of A union B. So from this we can get probability of A union B is 1 minus 0.1, that is 0.9. Okay, now you can easily apply this formula to find probability of B, right? अब तो easy peasy है, राइट बस इतना सा ही कैच था इसमें कि आपको वर्डिंग समझनी है कि बोथ एंड आ रहा है तब क्या करना है। पासिंग नीदर का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि या इंग्लिश भी नहीं और तो और साथ में हिंदी भी नहीं और, राइट। सो इंटरसेक्शन ए नॉट बी, ओके, उससे हमने ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ढूंढ लिया। नाउ यू कैन इजीली पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.9 is equals to 0.75 plus probability of B minus 0.5. So इससे आप easily probability of B ढूंढ सकते हो, which will be equals to 0.9 minus 0.75 plus 0.5, which will be equals to 0.65. Okay, so this is the solution to our question. Moving to the last question of this exercise. Okay, read the question, what the question is saying to us. Okay, in a class of 60 students, एक class है 60 students का, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS, 22 opted for both NCC और NSS. Okay, ये programs होते हैं NCC और NSS, right? उसमें से हमारे पास sample space है 60 peoples का, right? I am defining event A as student opted for NCC. I am defining B as student who opted for NSS. Okay. Now हमें डेटा दिया है कि 30 जनों ने NCC ऑप्ट करा, 32 ने NSS, 24 ने both. So in A there are 30 students, in B there are 32, and 24 opted for both NSS and what was and intersection. Yes, A intersection B is 24. Sorry. Now we need to find the probability that the student opted for NSS or NCC. One thing to note down here, हमें यहाँ पे probability नहीं दिया हुआ है, हमें यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी हमें खुद ढूंढना है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसी को प्रोबेबिलिटी समझ के इसी पे ढूंढना शुरू कर देंगे, राइट? नो, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इटसेल्फ। हमें सिर्फ स्टूडेंट्स किया, टोटल स्टूडेंट्स दिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल, दैट इज 30 अपॉन 60, दैट इज 1/2. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 32 upon 60. Do the math, cancel 32 upon 60, what will it be? That will be 8/50. Similarly, you can find probability of A intersection B is 24 upon total students, that is 60. What would it be? 2 upon 5. Okay, now we can move to our question. First is find the probability of student opted for NCC or NSS. और का क्या मतलब होता था? Union. So we need to find A union B. वापस सेम फॉर्मूला से आप कर सकते हो. You just need to put values. So easy. You can do it by yourself. Take it as homework. Next is that has opted neither NCC nor NSS. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा neither nor वाला कॉन्सेप्ट. neither nor वाला कॉन्सेप्ट क्या हुआ? A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, ये भी नहीं और तो और साथ में ये भी नहीं होना चाहिए. So what would it be? Probability of A intersection, sorry, A complement intersection B complement. We need to find this. हमने पिछले क्वेश्चंस में ही neither और nor वाला कॉन्सेप्ट देखा. What it is? Nothing but probability of A union B whole complement, that is 1 minus probability of A union B. ये ढूंढोगे तो ये भी आपको easy मिल जाएगा. So you can do it by yourself. I have explained the concept, right? Next is third. The students had opted NSS but not NCC. ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने NSS तो करा है लेकिन NCC नहीं करा है. हमें इवेंट्स, आप याद करो अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में क्या सिखाया था? अगर कोई ऐसा इवेंट हो
जिसमें एलिमेंट्स जो हो वो एक के हो बट बी के ना हो. It used to be this, elements of A but not B. What was it? From A minus B, right? So what is the question asking over here is probability of B minus A. Okay. What was B minus? A minus B को और क्या लिखते थे आपने? If you remember, A minus A intersection B. We used to write it like this, right? So what would it be here? Probability of B minus probability of A intersection B, right? What is probability of B? What is probability of B over here? 8 by 15. What is probability of A intersection B? 2 by 5. Okay. So what will be the answer? 2 3s are common. 15, 6, 2 by 15. Right? This was a new question to you, right? But I think you got the explanation because हमने algebra of events बहुत अच्छे से करा था. So by this we are concluding our exercise 14.2. हमने दोनों एक्सरसाइज कवर कर ली इस चैप्टर की. इस चैप्टर में मेनली अगर आपको टाइप्स ऑफ इवेंट्स और एल्जेब्रा ऑफ इवेंट्स पे अच्छा कमांड है और आपको तीनों एक्सियोम्स पता है तो आप सारे ही क्वेश्चंस आई गेस प्रोबेबिलिटी के इजीली सॉल्व कर पाओगे. इट इज़ नथिंग बट सम बेसिक यूज ऑफ probability and set theory, and you should also have somewhat knowledge of combination and permutation because हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन देखा था जिसमें आपका permutation and combination का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. So that's it for this. We have completed our probability chapter. Next chapter will continue with our next lecture. I hope आपको पूरे चैप्टर में कोई डाउट ना हो. If हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें. This is a very easy chapter and very scoring chapter. You can have easily solve the question by basic knowledge. If you do like this video, please do like, share and subscribe to our channel. We'll meet in the next lecture with a new chapter. Till then, keep studying and keep learning. Okay.